welcome to yet another edition of Expressions for the New Indian Express. I have with me Anupam Kher, one of India's best-known actors. He has many identities. We'll talk about all of them, hopefully. There's Mr. Chawla, one of India's best-known editors. Anupamji, you're an actor in India, in the West. You're a Kashmiri Pandit, a very proud Kashmiri Pandit. You've been a movie bureaucrat also sometimes, sometimes successfully, sometimes not so successfully. You're the head of the anti-intolerance group in among public intellectuals in India. So you're many, many things. You're also a wonderful Instagrammer and recorder of conversations with your mother, Dulari, which I think give pleasure to a whole lot of people. So, and of course, it's your 39th year. You've just completed 39 years in the industry. You've launched your own website today. So many congratulations, and it's such a privilege to have you with us. Thank you so much. I'm so happy to see you and Mr. Chawla, who I've known, both of us I have known for so many years. Yeah. And to be very honest, we all have worn hats. Yes. Many, many hats. But Anupamji, I want to begin with your latest stint, and it's been so successful, New Amsterdam, which is possibly the #1 network show in America currently. And I believe that you shot a pandemic episode on that show, and it wasn't aired. So talk a little about that. It must have been quite something to have shot it before the pandemic happened in New York. Yeah, because in fact, we get one episode while we are shooting the next episode. So this was much before the pandemic was announced by WHO, much before this whole thing. And I was the one who gets that virus. Right. So suddenly, really? Yeah. I was the center of focus in this whole thing, and how Dr. Kapoor feels, and the whole, one of the doctors dies, junior doctor dies because of that. Right. And the next person who has been working with these patients all over the place, we have we put up a tent outside because the patients are pouring in, right. And we discover that Dr. Kapoor has got this virus, and it reaches a very final stage of it, and then what happens? And then that was episode 18. Right. Then we shot the episode 19. And during the episode 19, the pandemic was announced. Right. And then we had to cut down the other 3 episodes because we were supposed to do 22 episodes. And I came here, and then we were informed that they will not show the pandemic episode because it's too close to life, it's too close to reality, too close to truth. Right. But we did shoot that whole thing, and for the writers to come up with this, and it's so similar to what has happened. Yeah. How it happens through this virus and through this infection. Right. And I'm glad that, and then they showed 10 minutes of that in the final finale episode because they needed to introduce another actor who got introduced in this particular episode. Right. So otherwise, yes, it was there, and I'm glad that that was deleted because people would have thought that we are cashing in on the situation. Right. But the graph of New Amsterdam is phenomenal. That when I read the pilot episode, and I had to take a major decision before signing the pilot itself, that I will be. They had asked me to sign a 6-year contract, which I thought I will not be doing it. So I had said I will only do 3-year contract. Right. But now the show has got 3-year extension together. Right. So that means 5 years in any case going to be there. And it's wonderful to be recognized on the streets of New York and other parts of America as Dr. Kapoor. Right. Otherwise, earlier Indians used to recognize, or Asians, or people films where Indian films are very popular. But it's a great feeling that when Americans stop you and sort of say, "Aren't you Dr. Kapoor? I wish my doctor was like you." Because my character brings out a lot of Indianness to the character of Dr. Kapoor, that he holds back. Yeah. He does not sort of immediately. He is very compassionate towards his patients, etc., etc. Yeah. But he also has a very troubled relationship with his son, and that. And you brought in a whole lot of your own personality to the room also, I believe.
I brought in a whole India to the show. Right. Apart from my personality in Dr. Kapoor's room, the pictures are actually of my parents. Right. My younger photographs are of mine. Right. But I also bring in, because I'm not an American settled Indian, so I know exactly what is to be called, what is to be happening, what are the rituals, etc., etc. Right. And it's fun to sort of make every other actor on the set to make them do Namaste and Om Namah Shivaya. Or to add little that samosa is not the only thing that we eat. पकोड़े भी खाए कि नहीं? Sorry? पकोड़े भी खाए कि नहीं? नहीं तो अच्छी अलग अलग चीजें हैं पूरा. I did a whole research about Dr. Kapoor that they had asked us for one paragraph of what is the back life of this character, right? The backstory. So they thought I will send them one paragraph. I sent them 16 pages. Oof. That where Dr. Kapoor was born, that where he settled in Ludhiana, and then from where he went to when he went to etc. So it was a great research done and then sent it to them. अनुपम, मैं हिंदी में से पूछ रहा हूँ कि वहां पर भी जाकर के आपने जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न एंटरटेनमेंट है उसका भी भारतीयकरण कर रहे हैं आप क्या? क्योंकि मेरा नाम अगर डॉक्टर फर्नांडिस होता या डॉक्टर लुइस होता तो शायद मैं नहीं करता, पर मेरा नाम है डॉक्टर विजय कपूर. और ये बहुत बड़ी मेरी एक उपलब्धि है क्योंकि जो वहां पर इंडियन कैरेक्टर्स को डालते हैं वो बड़े क्लीशे रिडन होते हैं. जैसे मैं कल एक सीरीज देख रहा था, उसमें वो कैरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता, वो इंडियन था, कोई 2 सीन थे उसके, उसका नाम था डॉक्टर मित्तल साहब. मित्तल उसने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया तो वो उसने कहा आई एम डॉक्टर मिटाल. Yeah, but it's fine. Also, you are so far away from your own country that you miss these small little things. और सारे मेरे अलावा पूरे सेट पे जितने भी हैं वो अमेरिकन्स हैं या ब्रिटिशर्स हैं. I'm the only Indian on the whole set. So मैं तरस जाता हूँ और मैं इतनी अंग्रेजी जिंदगी में कभी नहीं बोली है जितनी मेरे. That also medical terms. मैं सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि इंडियंस वहां जाकर के अमेरिकनाइज हो जाते हैं, वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, तो और एंटरटेनमेंट है या कोई और भी थिएटर है या कुछ और है, ये सैकड़ों सालों से, पिछली सदियों से, इट हैज बिकम ए टूल फॉर आइडियोलॉजिकल प्रमोशन ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज़ एंटरटेनमेंट हैज बीन बेसिकली dominated by left liberal agenda. So I'm trying to put it whether this whole show you're trying to make it more desi in terms of Indian philosophy, Indian culture, Indian etiquettes. You're trying to introduce to the West. Is it some kind of a conscious effort, or it is part of the? No, a part of it is to be authentic. To have lived 63 years of my life or 62 years of my life in India. It's not that I have gone there at the age of 35 and whatever they say I'll accept it or something like that. I have a certain amount of say that in the script. There are certain things that I get changed कि ये होगा नहीं, जैसे reference किसी चीज का था जो हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है. कैसे? क्या था? Sorry? क्या था वो? जैसे उसमें एक रेफरेंस था वो बिल्ली का नाम काली रख देते हैं. अच्छा. तो मैंने कहा ये ऐसा होता नहीं है. बिल्ली और वो जो है वो काली जो है वो गॉडेस ऑफ डेथ. इट्स नॉट दैट देयर इंटेंशन इज टू सॉर्ट ऑफ, they're ignorant about it. या फिर जब वो गर्भवती एक जो होती है, वो जो लेडी मेरे घर पे आती है, तो even though I am a widower, but I do a certain ritual which episode was directed by Lucy Liu. So there are certain things that I do bring in, और सांस लो, जैसे अच्छा बोलना बीच में. But at the same time, I am a little aware that it will be fun to have a mainstream American series to bring in a certain amount of Indianness. Right. Yeah, it's a conscious effort also. Right. And do you feel that Indians there are appreciating this because they also see themselves as sort of stereotypes? Yeah. They are very, very proud of me. Yeah. They feel that because Indians over there are more Indian than Indians in India. Because उनको अपना ट्रेडिशन संभाल के रखना है, because उनको लगता है कि वो छोड़ के आए हैं देश. तो उनकी जो फर्स्ट जनरेशन खासकर जो है, उन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं या अपने मस्जिद बनाई हुई हैं या जो भी गुरुद्वारे वगैरह हैं, तो इसलिए उनको they are very conscious of the fact.
और उनको लगता है कि हमारा अपना बंदा। मैं 550-15 फिल्में तो करके गया हूँ वहां पर। आई एम पार्ट ऑफ देयर हाउस होल्ड। You know how NRIs are, and as I live through movies, right, movies. So, and then for me to sort of bring on these small little elements, they are very thrilled about it. They feel very proud, and उनको तो मतलब उनको लगता है कि हिंदुस्तान का झंडा लेके घूम रहा हूँ मैं वहाँ पर। वो तो वैसे भी आप घूमते ही हैं। But Anupam ji, I wanted to ask you, how is life in New York? क्योंकि यहाँ तो you are a star, you have your own entourage. वहाँ things are different. You're sort of in a way beginning your career again. So that was a conscious effort, Kaveri, that I was getting a little worried about for the last 5-6 years over here being called veteran thespian legend. I know that people were doing that because of their respect for me, but एक ये क्लीशे भी है कि अब ये इतनी फिल्में कर चुके हैं, अब ये 60 की उम्र तक पहुंच गए हैं, आप इनको जैसे जर्नलिस्ट के आदि होता है। I'm sure Prabhuji is the veteran thespian and legend journalist of Indian journalistic whatever. So मुझे इस बात से घबराहट हो रही थी क्योंकि अंदर से मुझे लग रहा था there is so much of work in me, there is so much of things left in me. Mind was बिल्कुल brilliantly alive. मैंने कहा यहाँ पर इसके बाद ये मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देंगे और मैं व्हील चेयर पे होऊंगा तो कोई दूसरा अवार्ड मिल जाएगा और फिर I will walk into the sun. But I will not do that. I want to reinvent myself. I want to start from a beginner's life. That's why one of the reasons of accepting this series was this, that I did not go with any burden of being Anupam Kher over there. I wanted to have an anonymous life and not this thing. But my people on the set are aware of my body of work. Right. The people on the streets, which are Indians or Asians, उसमें सब है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जितने भी हैं, मलेशियन वगैरह, वो सब हिंदुस्तानी फिल्में इतनी ज्यादा घरों में घुसी हुई है कि it's amazing. Part of Russia, there are so many people who love Indian movies, Uzbekistan वगैरह. But I wanted to be a newcomer all over again. So, and also when you do English films, your work is 10 days or 15 days and you do one scene a day. Over here, I have to do 4 to 5 scenes every single day. So my life started that I will get up at 5 o'clock, do my lines, because it's a medical drama. My medical terms जो हैं इतनी मुश्किल हैं, और मैं अंग्रेजी की भाषा का इस्तेमाल करता हूँ to communicate. Right. But when you are given those dialogue where negrilisis is the word, then metamorphosis और तो मैं तो घबरा जाता हूँ. और फिर वो भी अमेरिकन तरीके से बोलना है. No. How did you speak another sentence in American accent? Sorry, नहीं मुझसे American accent में बोला होगा ना या पंजाबी accent में ही बोला आपने? कश्मीरी accent. कुछ लोग जो हैं कुछ शब्द जो हैं जैसे वो अपने तरीके से बोलते हैं, हमारे यहाँ अपने तरीके से उन शब्दों का इस्तेमाल होता है. बट जब मुझे लगता है कि मैं ये मेरा मन में मतलब इतने गुड ह्यूमर मजाक उड़ाते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ बोलिए अनिश्चित काल. चलो बोल के बताओ वास्तविकता, या बोल के बताओ ओम श्री गणेशाय नमः सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी वेशरूपी, बोल के बताओ. तो निश्चित काल में बोल सकता हूँ, के गाने भी गवाता हूँ. बट इट्स अ वेरी वंडरफुल यूनिट टू वर्क विद. आई थिंक that's a joy to work with. But I did not want to go there with the tag of this thing. So I'm happy that I went there as a nobody and I can roam around. I can walk on the streets of New York. I'm keeping myself fit. There is a gym in my building. There is a swimming pool. I started learning swimming. I never knew swimming. I started learning swimming. Right. Started doing piano classes earlier. I go to see movies. I am now the part of Academy of Oscar this thing. So I get get invited to the films which are not released. So it's a great. Plus, you're friends with Robert De Niro, huh? And I am proud and sort of very. I get cheap thrills by saying that I am friends with Robert De Niro, and through him I went to see this Irishman premiere, and there I met Martin Scorsese, Al Pacino. Al Pacino. These people is like you're meeting the eighth wonders of the world. Right. If you are an actor. Yeah. उसके बाद अपने दिमाग का भी तो चर्निंग होती है ना. हाँ. You feel so many. हाँ जी, आप बोल रहे हैं प्रभु जी, क्या बोल रहे थे? मैं पूछा वहाँ जाकर कि नेशनलिज्म का जो एजेंडा है आपका देश में, वहाँ पर लिबरल आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं नेशनलिज्म एजेंडा जैसे कोई बीमारी है. नहीं, लोग समझते हैं, मैं तो नहीं समझता.
I'm proud to be a nationalist. Hindustani liberal nationalist, not nationalist. I'm proud to be a liberal nationalist, but not a fundamentalist nationalist. But वहां जाकर के आपको लगता नहीं ये पढ़े लिखे लोगों को डिफरेंस पता होता है, मुझे तो ये डिफरेंस पता नहीं है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पीछे किताबें लगी हुई हैं। नकली है, मैंने कोई किताब लिखी ना, पढ़ता बहुत कम हूँ किताबों को, मैं बोलना जानता हूँ थोड़ा बहुत, जी, आप लोगों से सीख लेता हूँ। तो वहां पर भी आपको तो बहुत प्यार करते होंगे लोग, वहां पर ऐसे लोग बहुत हैं जो एक लीडर जैसा आदमी ढूंढ रहे होंगे। तो वर्ष का झंडा उठा के घूमता रहा वहां पर। ऑफ कोर्स मैं तो वहां पर जब भी जाता हूँ, जो भी काउंसिल जनरल के जो हमारे फंक्शन होते हैं, मैं जाता हूँ 26 अगस्त 15 अगस्त मैं अपने सेट पे मनाता हूँ। 15 अगस्त मैं अपने सेट पर 26 जनवरी मनाता हूँ। वो अगर 4th ऑफ जुलाई मनाते हैं तो मैं 15 अगस्त क्यों नहीं मना सकता? वो अगर नेशनल एंथम के समय खड़े होते हैं या अपने दिल पर हाथ रखते हैं तो मैं अपने नेशनल एंथम के लिए खड़ा क्यों नहीं होऊंगा? हमारी पहचान ही है देश का झंडा, और देश हमारी पहचान है, यही तो बात है। प्रॉब्लम क्या है कि सो कॉल्ड लिबरल्स ने इतना अपना एजेंडा बना रखा है कि उनके उस एजेंडा को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कभी कभी इसको अपने स्लीप पर लेके चलना चाहिए। तो आप न्यूयॉर्क में वो झंडा कर रहे हैं ना, लिबरल्स का जो मोनोपोली वहां बनी हुई थी अभी तक, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने देश से लेना देना है। और उसमें दिवाली वाले दिन भी मैं जाता हूँ, जब दिवाली होती है, या ईद वाले दिन भी मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो हिंदुस्तानियों को होता है। मेरे को बहुत सारी बार पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर या बांग्लादेशी टैक्सी ड्राइवर लेके आते हैं, अपने अपने वतन की बात करते हैं। वहां पर कोई इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। जितने भी पाकिस्तानी ड्राइवर्स होते हैं येलो कैब के, उन सब ने हिंदुस्तानी फिल्में देखी हैं। वो सब पूछते हैं कि शाहरुख खान के बारे में बताओ, आपने शाहरुख खान के साथ 7 फिल्में की हैं, या दिलीप कुमार के साथ वो थप्पड़ वाला जो सीन है वो बताओ। और मैं करके दिखाता हूँ, पूरा डायलॉग बोल के दिखाता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट अनुपम जी, जब आप वापस आते हैं इंडिया तो आपको वो डिविजन्स दिखाई देते हैं जो आपको वहां नहीं दिखाई देते। वही ट्रेजेडी है ना कि वहां सब इकट्ठे हैं। I have learned over a period of time in the last 2-3 years or 1 or 2 years, I've learned to sort of ignore and not react to everything that I see. You know, it's not necessary because it takes your energy. It takes everything. It takes too much of energy to sort of keep proving certain point of view. ये हर देश में अपने अपने प्रॉब्लम होते हैं। अमेरिका में देख लीजिए आजकल क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वो प्रॉब्लम अब फ्रांस में चले जाइए, ब्रिटेन में चले जाइए, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर आजकल नहीं है? तो हर जगह बिखरे हुए हैं। बट जब वक्त आता है तो सब लोग साथ हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो सब लोग साथ होते हैं। बट आई थिंक ये सबका फंडामेंटल अधिकार है कि अपनी अपनी राय व्यक्त करें। अब किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी का दूसरे का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये अलग अलग है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्नड टू सॉर्ट ऑफ realize that it's not that you have to react to every statement that somebody makes, that you have to sort of. So आप नोट करेंगे पिछले 1 साल में मैं काफी बैक सीट ले रही थी, not because I don't want to do it, but I'm doing so much work. You have to surround yourself with positivity. As it is, the world is full of, look at what is happening in 2020. If you on top of it start getting into this, then there is no end to it, and you need a peace of mind. It's important to have that. आपको लगता है the film industry is divided currently along political and somewhat religious lines as well as never before? After all, आपका भी नसीरुद्दीन शाह से publicly एक विवाद हुआ था और उन्होंने कुछ बोला, फिर आपने कुछ बोला। This is true for every industry. आपको क्या लगता है पत्रकारों के बीच में मतलब बहुत प्रेम है? You can really demarcate the patrikar and journalist and put a line to them. This is from this faction. This is from this faction. And this is very evident. Film का जहाँ तक I don't think religious level पर हम बटे हैं. Yes, political level पर जरूर बटे हैं। और नसीरुद्दीन शाह साहब ने, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे सीनियर हैं और मैंने उनके बारे में कभी अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं बोला। I think he took a little far away when he said कि इनके खून में है ये। So it was important to give it back to him, and I'm happy. कावेरी ने जो सवाल पूछा मैं थोड़ा आगे लेना चाहता हूँ। ये डिवीजन जो हुआ, जो ऑब्वियस डिफरेंसेस सामने आए हैं बॉलीवुड में या पत्रकारिता में, जो आपने बात बताई है मैं आपसे सहमत हूँ। There is some kind of visible disagreement on political lines
both in the Bollywood, intellectual cells, and media as well. But I'm asking this question since you are in America now. You must be facing the same problem. People see you as pro-Modi, pro-Hindutva. तो आपको वहाँ भी ये लगता हो कि division ज़्यादा है और you represent a particular color of India, which may not agree by everybody else there. Have you felt that in New York? No, I think New York is full of Mr. Modi supporters. At least that I met. I feel that Mr. Modi has done a lot of good for our image, India's image abroad, but that's a separate issue. जो हिंदुस्तानी फिल्मों में जो इसका डिवीजन है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया, ये पहले भी लोगों को पता था कि जनता दल के साथ कौन है, या मेरा कहना ये है कि जो आदमी वोट देता है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है। जब आप उस डब्बे के पीछे जाते हैं और आप किसी भी चिन्ह पर अपने मोहर लगाते हैं, you have put yourself, aligned yourself to a political party. The only thing is the world does not know it. Right. So anybody who votes belongs to a political party unknowingly or believes in a political party. I think this whole thing started when in 2014, before Mr. Modi was about to become the candidate for prime ministership, there were 60-70 people from film industry who made a petition where they sort of said that Mr. Modi should not be the prime minister of the country openly. Who were those signatories on that letter. I think that was the beginning of a divide, because that was the first time when a section of film industry people, whether they were writers, directors or actors, who on a piece of paper put a situation where they said ये आप साइन करोगे, ये हमने ये सोचा है। फिर जब ऐसे लोग आए तो बाकी लोग जो उन पर नहीं बिलीव करते हैं, जो मिस्टर मोदी को बिलीव करते हैं या whatever that is their ideology, they said that why? So that is how this whole thing came out. It was not there, it was hidden. People were nice, people were not vocal about it. Not like West. In West they put jhanda outside of Democrats or of Republicans. Yes, Republicans. You're right. हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता, पर ये तब ये सामने आया जब ये बोला गया कि यार, जब कुछ लोगों ने लेटर लिखा अमेरिकन्स को कि इनको जो है वीजा नहीं देना चाहिए, वो भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसमें थे. So when those people were very evident about their likes and dislikes, that is how it started. Yeah, Anupam, you're right. They wrote the letter also there. And what I'm saying that there is conviction. My favorite phrase has been, conviction is a matter of convenience. बॉलीवुड में पहली बार दिखाई देगा जो लोगों ने मोदी जी के खिलाफ झंडे गाड़े, जो धरने पे बैठ गए, और मोदी जी के सबसे बड़े भक्त उनमें से कुछ हैं और उनके घर भी पहुंच जाते हैं, बुलाया जाता था, फोटो भी खिंचवाते हैं. तो बॉलीवुड में भी एक साइकोपैथिक की टर्न हुआ कि जैसे मोदी जी ने उंगली खड़ी की, सब आकर के लेट जाते हैं वहां पर. तो ये एक नया फिनोमेना आया है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को भी better to लेट जाओ in front of Modi ji than in front of the other person who is trying to be the prime minister for the last 15 years. At least he knows his job. At least he knows for the last 20 years, for 15 years, he was the chief minister of Gujarat. And for the last so many years, he has been a party to another political party. So I am glad that people who झुक जाते हैं, लेट जाते हैं, for a person who has earned that respect and earned that adulation, rather than a person who can't speak a one sentence without making 3 mistakes in it. But I don't know whom you're referring to. But come on. ये तो मतलब. पर ये बात सच है कि 2002-2004 में धरने पे बैठे या कुछ और किया, उसके बाद यहाँ पर क्रिकेट बुलाया गया, उनको बड़े फिल्म स्टार हैं, उनके नाम भी अजीब किस्म के हैं, पर लगता नहीं कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इस तरह के, they were always entertainers, they were not part of political narrative. But आप क्योंकि झंडा गाड़ के चलते हैं कि मैं के मोदी जी के साथ हूँ, मोदी की विचारधारा के साथ हूँ, मोदी जी जो करते हैं वो मेरे को भी वही पसंद है, ये नहीं कि आप उनको इसलिए पसंद करते हैं कि वो एक विचार, पर आपकी विचारधारा भी उनसे मिलती है. पर एक बात बताइए, किसी की कोई कन्विक्शन है उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ. आप मुझे कहेंगे कि आपका ये दोस्त है पिछले 25 साल से, यार ये आपका दोस्त पिछले 25 साल से, इसमें ये खामी है, ये खामी, आपका दोस्त नहीं होना चाहिए. कल को आप कहेंगे कि आपके पिताजी, माताजी या आपके जो कजन्स ब्रदर हैं, ये क्या बात हुई? मतलब कोई किसी को पसंद करता है तो आप उसकी पसंद पर, अब मैं आपको कोई पेंटर पसंद है, मुझे वो पेंटर पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा वो पेंटर अच्छा नहीं है.
Anupam, why I'm raising this question because Bollywood was earlier divided among individual groups कि ये शाहरुख खान ग्रुप है, ये कोई आमिर खान ग्रुप है, ये अपने जो बाकी लोग हैं उनके साथ ग्रुप जो उनके साथ होता है. अब क्या हो गया कि now it has become a Modi versus the rest. ये एक किस्म people have made that. You people who have journalists who have they have made that. It is जर्नलिस्ट आपने तो नहीं कहा कि आपको तो पहले ही पता था. अब मैं नाम नहीं लेना चाहते आपके बहुत सारे कुलीग्स के जिनको देख के पता था ये सोनिया गांधी जी के साथ हैं, ये राहुल गांधी जी के साथ हैं. जब ये सोनिया गांधी जी का इंटरव्यू करते हैं तो पूछती हैं आपकी सास को कैसा खाना पसंद था किचन में या ये जब इस तरह. तो ये तो हर जगह था. ये कोई इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है. 2014 के बाद शुरू हुआ ना ज्यादा. बिकॉज 2014 में वो खत लिखा गया. नहीं मैं आपने तो सब लोगों को जोड़ दिया ना, हमको भी उसके अंदर लपेट लिया, तो इसलिए मैं जर्नलिस्टों को भी लपेट लिया. पर लपेटे हुए हैं ना यार, आपको पता है नहीं है कि मतलब आप नाम नहीं ले रहे तो मैं भी नाम नहीं ले रहा, वरना तो आपको पता है एक पूरी फहरिस्त है. नहीं कल एक डिबेट CIA में हो रही थी, उसमें मैं पार्टिसिपेंट था. मैंने यही कहा कि आजकल सबको पता है कि शाम के टीवी चैनल पर कौन क्या बोलने वाला है. या पहले प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म वाज नॉट अ वर्च्यू. Now it has become a virtue. देवर प्रभु जी, आप तो मैं आपको स्ट्रगल के जमाने से जानता हूं और there are disillusionments with certain people on every level. There are certain journalists who were my heroes, really of my struggling days, of my earlier days in movies, and then they turned out to be zero. Whatever, not because, and this was much before 2014. It was much before Mr. Modi came on the forefront. I was so badly disillusioned. Like people must be disillusioned with my performance in a film. कि यार ये तो बड़ा अच्छा एक्टर था, इसे सारांश में कितना अच्छा काम किया था, मगर ये निगाहें फिल्म में इसने कितना बुरा काम किया है. But वो project to project होता है. There were so many people who were fearless. I thought यार ये तो fearless हो गए, और बाद में पता चला कि ये तो नहीं, ऐसा नहीं है. तो आई थिंक हम आसानी से टैग कर देते हैं लोगों कि यार इसका ये टैग है, इसका ये है, इसका ये है. ऐसा नहीं है कि अब अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग तरीके से बात नहीं होती है. शायद ये जिद हो जाती है जब आदमी प्रूव करना चाहता है कि यार तुम जब भी मोदी जी कोई अच्छी बात करते हैं तो तुम अपने घुस जाते हो, जब फलाना कोई बुरी. आप मुझे बताइए, एक प्रजातांत्रिक तरीके से एक आदमी 2 बार जीता है ऐसी मेजॉरिटी के साथ, तो सिर्फ मैं नहीं, वो तमाम करोड़ों लोग भी होंगे ना जिन्होंने वोट दिया है. मतलब 2014 में तो 2019 में तो ज्यादा वोटों से जीते ना, तो किसने जिताया 2014 में 19 में? सो आवाम उनके साथ, इस बात को मान के चलो कि आवाम है, दुनिया पूरे इतने परसेंटेज भारतवासी उनके साथ हैं बिकॉज दे बिलीव इन हिम. Just because a Bollywood actor is talking about his achievements does not take away the fact that there are millions of other people. And unfortunately, what is the problem? What is the tragedy? The tragedy is when BJP was in opposition, it was a very strong opposition. There were leaders like Atal Bihari Vajpayee, there are leaders like Mr. Advani, there was Sushma Swaraj, there are Arun Jaitley ji, तो खड़े होके बात कर सकते थे और बात करते, और उनमें gravitas था. Unfortunately, in today's time, anybody who stands up, you discover that there is a story behind this person. So, unless we have in opposition leaders of credibility, it is very important to sort of have opposition leaders which are very strong and credible. Unfortunately, today वो नहीं है.